फिर भी दुनिया उनके कदम चूमती है क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। तो चलिए बात टू सेल नूडल्स। LG was a cosmetic brand. IKEA used to sell pen. अब क्या है JBN के मीटिंग्स में मुझे 200-300 के क्राउड पे एड्रेस करने की आदत है। இப்போ நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ். என்னது 5+ OTTs, 800+ பிளாக்பஸ்டர் மூவிஸ், அதுவும் 1+, 2+, 3+ மல்டி+ லாங்குவேஜஸ்லயா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் மூவிஸ், பிராண்ட் நியூ வெப் சீரிஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷார்ட் மூவிஸ். வாவ், இதுல இவ்ளோ பிளஸ் இருக்கா? இதுல இருக்க ஒரே ஒரு மைனஸ், அதுவும் நமக்கு பிளஸ் தான். மத்த எல்லா OTT-ய விட மைனஸ் பிரைஸ்ல, அதுவும் ஒரு நாளுக்கு ₹1 தான். OTT Plus டவுன்லோட் பண்ணி நான் என் சந்தோஷத்தை பிளஸ் ஆக்கிட்டேன். அப்ப நீங்க OTT Plus இது ஆல் இன் ஒன் ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT Plus இதுல எல்லாமே பிளஸ். हमने प्रॉमिसेस नहीं किए, हमने प्रेडिक्शंस भी नहीं किए, हमने बस परफॉर्मेंस किया. नो शो ऑफ, नो स्पॉटलाइट चेजिंग, ओनली सिंसियरिटी, ओनली सब्सटेंस, ओनली सोल. क्योंकि हम मानते हैं जो काम करते हैं उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. And today in this room we don't need validation because our vision already echoes across the nation. We all know that नवकार में अगर रास्ता है तो उलझनों में भी रास्ता है. और नवकार मंत्र दिवस के पीछे जो सुपरमैन खड़े थे, एपेक्स के हमारे आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, we are missing him here today. दोस्तों, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी, नेटवर्क. नेटवर्क ही नेटवर्क है. अमेज़न के पास खुद की दुकान नहीं है, ज़ोमैटो के पास खुद खाना नहीं बनाते हैं, उबर के पास कोई गाड़ी नहीं होती, फिर भी दुनिया उनके कदम चूमती है क्योंकि उनके पास नेटवर्क है. तो चलिए बात करते हैं उस मिशन की जिनकी वजह से हम सब यहाँ हैं. JBN सब जानते हैं, इट इज जीतो बिजनेस नेटवर्क. बट मैं मानता हूँ JBN इज नॉट जस्ट जीतो बिजनेस नेटवर्क. JBN is journey beyond networking. JBN is jumpstart, build and navigate. JBN is जन्मों जन्म तक रहने वाला बिजनेस नेटवर्क. This is the launch pad. मेरे हिसाब से JBN is जहां से बिलियनर्स निकलेंगे. और इस विजन के बैकबोन हमारे JBN टाइटल स्पॉन्सर श्री उज्जवल जी पगारिया जी आज यहाँ मौजूद है. सर, आपका सपोर्ट इज नॉट जस्ट स्पॉन्सरशिप, इट्स फ्यूल टू अ ड्रीम, इट्स फ्यूल टू अ सॉलिड फ्यूचर. थैंक यू फॉर कमिंग टू चेन्नई एंड honoring us. And also I wanted to talk about the energy behind JBN. The chairman of JBN Apex श्री कैलाश जी गुलेचा, ये एक ऐसा लीडर है जिनको ना कहना आता ही नहीं है. जो करते हैं तो दिल से और जीतते हैं सबका दिल. He is not a leader by position, he is a leader by passion. सर, आपके साथ काम करके लगता है impossible is just another word waiting to be crushed. कैलाश जी कहाँ पे बैठे हैं? कैलाश जी कैलाश जी does not wait for green signal, he builds the highway. सर, आपका काम बोलता नहीं, वो गूंजता है. कैलाश साहब, आपको नमन. People say right place, right time, but we say be the right person in the right room at the right time. And this time that room is Pagaria JBN International Business Conclave happening at Colombo. And do you know how many registrations we already had?
in less than 48 hours. Dheeraj, 48 hours. Colombo में मिलेंगे with a coconut in one hand and dreams in the other, and a network that will build empires. And if you miss it, bro, don't blame the market. Please blame your calendar. Let's meet at Colombo. Let's turn conversations into collaborations. Let's not just make friends. Let's make fortune with friends. आपको पता है, and everyone remembers, Lamborghini once made tractors. Samsung used to sell noodles. LG was a cosmetic brand. IKEA used to sell pen. आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, आपका नेटवर्क करता है. Let's build a network that builds us and stay strong. Let's keep learning and let's write a story that the next generation of JITO will remember. Because JITO Chennai Plus is not just a baby chapter anymore. We are not a shadow. We are the spotlight. And this is not just growth. This is a movement. Let's not just rise. Let's rise together. जय जिनेंद्र, जय. जो इवेंट लोकल होता है उसको नेशनल ले जाते हैं, फिर हमारे कैलाश जी आते हैं. जो नेशनल होता है वो इंटरनेशनल हो जाता है. वेल, जय जिनेंद्र, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर and representing JITO Chennai Plus's JBN. The last 9 months have been months of mouth-watering experiences. Thank you to Pramod Chordia, KJ, Kamlesh Jhabak, Vikin Bam, Bharat Goti, Lalit Kanoga, DK, and my dear youth wing friends for having helped me get this far in the last 9 months. थोड़ा नर्वस लग रहा हूं हम आप लोगों को. क्या है, जेबीएन के मीटिंग्स में मुझे 200-300 के क्राउड पे एड्रेस करने की आदत है. आज कुछ 1600 लोग हैं तो थोड़ा नर्वसनेस तो बनता ही है. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से. आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आर यू लिसनिंग? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे को एक तो आवाज आई जेबीएन पावर कॉन्क्लेव लॉन्च के लिए. मैं भी स्कूल में जब था तो 5-5 मार्क ऐसे ही बढ़वाता था, बस का मार के. वेल, आई नो यू आर ऑल हियर फॉर ऋषभ रिकिरम शर्मा's फैंटास्टिक शो. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज. आप सोचिए, लॉन्च में अगर ऋषभ रिकिरम शर्मा आएगा तो एक्चुअली इवेंट में कौन कौन आएगा? धूम मचेगा. There will be curated sessions. There will be one-to-one meetings with people who always wanted to meet. There will be premium experiences. For people who understand a little bit of Jainism, अगर आप नमोत्थुनम सुनते हैं तो नमोत्थुनम में आता है ज्ञानम जागरणम, किन्नानम कार्यानम, तनमुआनम. What is all that? It's a series of superlatives, and what you are going to experience in Colombo is going to be a series of superlatives of JITO Business Network. So guys, looking forward to seeing you all at Colombo. It's people at the back. JBN Power Conclave at Colombo. Are you all listening? JBN Power Conclave at Colombo is open for all. JITO has no bar on caste, no bar on creed, no bar on gender. Ladies, youth, सिर्फ एफसीपी बनना है और JITO में मिलना है. So looking forward to seeing you all at Colombo, August 15 to 17. Thank you for listening to the question. Jai Jinendra everyone. Respected dignitaries, सुरेश जी साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब नरेंद्र जी साहब, महावीर जी मेहता इंटरनेशनल चेयरमैन, डीके साहब जोन चेयरमैन, जितेंद्र जी साहब गुजरात जोन चेयरमैन, संजीव जी साहब, हमारे पावर हाउस, हमारे टाइटल स्पॉन्सर उज्जवल जी साहब पधारिया, और हमारे डीआईसी महावीर जी साहब,
Sonali ji, and my family, my team, JBN FX. धीरज जी, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ऐसा मेरे साथ 8 महीने पहले तक था। अब मेरे को तन्हाई का समय जेबीएन में आने के बाद मिलता ही नहीं है, तो अब मैं सिर्फ नेटवर्क की बात करता हूँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात करती है, मेरी जिंदगी से तो निकल गया है। अब आते हैं आज की इवेंट पे कि आज का इवेंट क्या है। ऋषभ जी को तो हम सबको सुनना ही है, पर उसके पहले ऋषभ जी को सुनना है, ऋषभ जी को लाना है, तो उसके पहले बिजनेस बनाना है। एक थॉट चली, ये इवेंट क्यों, ये विजन कैसे स्पार्क हुआ। एक सिंपल क्वेश्चन से स्पार्क हुआ। प्रमोद जी ने बुलाया था यहाँ पे एक इवेंट के लिए, एक लॉन्च के लिए हम लोग बैठे थे, तो बात ऐसी चली कि क्या हो अगर हम ट्रस्टेड जैन बिजनेस हाउसेस को, ट्रस्टेड जैन्स को, वुमन लीडर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे साथ में लाए। पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे साथ में लाए हुआ, ग्लोबल बाद में हुआ। आंसर मिला पगारिया जेबीएन एफसीपी सीपी कॉन्क्लेव के रूप में, जो हम 15, 16, 17 अगस्त को करने जा रहे हैं। और ये आंसर इस तरीके से मिला कि सोच के चलिए, एफसीपी इज गिवर कम्युनिटी। हम यही एक हरदम बोलते हैं, जैन्स तो हरदम गिवर होते हैं, पर हम जीतो में एक राइट मिक्स लाना चाहते हैं, गिवर और टेकर दोनों का। अब इस राइट मिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा गिवर्स को इन्वॉल्व तो करना है, पर एक इमेजिन कीजिए क्या होगा, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी होगी जब गिवर्स आपस में मिलेंगे। और जब गिवर्स आपस में मिलेंगे तो स्केलिंग पे कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, ग्लोबल जाने में कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और उसीलिए इस इवेंट के बारे में सोचा गया था। एक अपने आप में फर्स्ट इवेंट स्ट्रक्चर्ड बिजनेस नेटवर्किंग में, अभी सुरेश जी साहब को बता रहा था कि हम सिर्फ वहां पर जाकर खाना खा के नेटवर्किंग के नाम के लिए नहीं मिलने जा रहे हैं सुरेश जी साहब, क्योंकि ऐसे लोगों को रिजल्ट्स पसंद आते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्किंग सेशन के रूप में इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 3 दिन का, जहां पर हर कोई हर किसी से मिलके एक दूसरे को जान पाए, ताकि आगे पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर पाए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एफसीपी कॉन्क्लेव। तो एफसीपी का मतलब क्या है, आप में से कोई भी एफसीपी का मतलब अगर बता पाए तो। राइट, फाउंडर चीफ पेट्रोन। मैं भी यही मतलब अभी तक समझता था, पर अब से मेरे लिए एफसी का मतलब इस कॉन्क्लेव के साथ, आफ्टर वर्किंग विद प्रमोद जी, कमलेश जी, धीरज जी और चेन्नई के साथ बात करने का, तो मेरे लिए एफसीपी कॉन्क्लेव का मतलब हो गया है फैंटास्टिक चेन्नई प्लस कॉन्क्लेव। एंड ये दिल से बोल रहा हूं, जो मजा पिछले कुछ समय से आप लोगों के साथ आया है वो अनबिलीवेबल है, और एक शुरुआत है। रिजल्ट जो आएगा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, ये हम आज गारंटी दे रहे हैं। जिसने रजिस्टर नहीं किया है वो मिस करेगा। और जैसा कि अभी प्रमोद जी ने बताया, 250 रजिस्ट्रेशन, दैट मींस 50% ऑफ द टारगेट रजिस्ट्रेशन जो हम देख रहे हैं 50% कंप्लीट हो चुका है, जिसमें महावीर जी का भी इंटरनेशनल का फिगर नहीं आया है, वो आने के बाद आपको बताएंगे। तो 50% टारगेट इवन बिफोर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन में हो गया है। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन आज इस इवेंट के बाद में स्टार्ट करना था, और परसों ऐसे ही एक थॉट आया, प्रमोद जी ने फोन किया और हमने सोचा ट्रायल के लिए जब इतने फोन आ रहे तो प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और ट्रायल क्या हुआ, ये तो उसने हमको सोचने में मजबूर कर दिया कि अभी इस कॉन्क्लेव के लेवल को क्या हमें और ऊपर ले जाना है, क्या नंबर्स बढ़ाने हैं। तो दिस इज पावर ऑफ जीतो एंड पावर ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। नाउ इसमें इवेंट में क्या होगा, ये तो धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा, पर इस इवेंट से हम क्या एडवाइस कर पा रहे, एक नया विजन क्या क्रिएट कर पा रहे। जब इस टर्म पे हमने जेबीएन की शुरुआत की थी तो विजन बड़ा सिंपल रखा था, पर इंपैक्टफुल कि जहां भी जैन वहां हो जेबीएन, एवरी इंडस्ट्री, एवरी सिटी एंड एवरी कंट्री। और हम उस लाइन में 8 महीने में बहुत अच्छा काम कर पाए। पर एक बेसिक क्वेश्चन हमें आया, क्या हम हर जीतो मेंबर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इस विजन में अभी अभी एक नया और जोड़ा, जहां भी जैन वहां हो जेबीएन, एवरी इंडस्ट्री, एवरी सिटी, एवरी कंट्री एंड एवरी जीतो मेंबरशिप टाइम।
क्योंकि हमने सुरेश जी फील किया, नरेंद्र जी फील किया कि जेबीएन में हम टॉप लेवल के लोगों को उतना नहीं जोड़ पाए। तो ये एचसीटी सीपी कॉन्क्लेव इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे हम एक एनुअल कॉन्क्लेव नहीं कर रहे हैं, हम हर मंथ में अब हर सिटी में एचसीटी सीपी डिनर डिप्लोमेसी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि ये रेगुलरली मिले और एनुअल जो हमारा ये कॉन्क्लेव होगा वो इसको फ्यूल करेगा इस टाइप से। सेकेंडली जो हमारा दूसरा बड़ा गिवर वर्ग है जेबीएन श्रमण आरोग्यम जीप ट्रस्टीज के रूप में, तो हम एक पगारिया जाइंट टैंक ये लॉन्च करने जा रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ जीरो कॉस्ट इवेंट टू एवरी चैप्टर और 2000 एटलीस्ट इवेंट्स हम ये हमारा टेन्योर खत्म होने के पहले करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ यूनिक बोर्ड रूम टाइप ऑफ इवेंट जहां पे कॉस्ट नहीं होगी पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होंगी। तो न सिर्फ एचसीटी सीपी जेबीएन श्रमण आरोग्यम जिप और लेडीज यूथ पेट्रन और हमारे रेफरल पार्टिसिपेंट्स के साथ तो हम काम कर ही रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी एन ऑल इंक्लूसिव अप्रोच। अब नेक्स्ट 30 सेकंड रिजल्ट्स की बात करते हैं। काफी लीडर्स बैठे हुए हैं। एक अच्छी टीम बनती है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, फ्रॉम 40 एक्टिव रेफरल ग्रुप्स इन 8 months टू नाउ 82 एक्टिव रेफरल ग्रुप्स। 29 को दिल्ली में एक लॉन्च, उसके बाद चंद्रपुर में एक लॉन्च के साथ 84 85 तक पहुंच रहे हैं और अगले कुछ महीनों में 100 क्रॉस कर रहे हैं। फ्रॉम 40 टू 100 इन 9-10 months। नाउ सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, नरेंद्र जी सुरेश जी बैठे हैं, बालाघाट एक छोटा सा शहर है एमपी में, वहां रेफरल ग्रुप आज से 3 महीने पहले चालू हुआ। रेफरल ग्रुप में पहले दिन 12 पेट्रोल मेंबर्स बने और 3 महीने के अंदर ये स्टेज आ गई है कि अब हम वहां पे जीतो का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहले दिन से रखा कि रेफरल ग्रुप में पूरे जीतो मेंबर्स होने चाहिए और जीतो का चैप्टर चालू होना चाहिए। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि हम काम क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ नाम के लिए रेफरल ग्रुप चालू कर दिया और उसके बाद वो क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो सिचुएशन पे नहीं छोड़ रहे, पूरा कंट्रोल रख रहे हैं रिजल्ट। और एक और खुशी की बात बताता हूं, ये बालाघाट का छोटा सा टाउन एफसीपी सीपी कॉन्क्लेव के लिए 2 लोग सीपी बन रहे हैं वहां पे। कल उनका फोन आया कि हमको सीपी बनना है और छोटा सा टाउन है, आप में से 95% लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना। तो दिस इज पावर ऑफ जीतो। नाउ कमिंग टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वी आर ब्रिंगिंग इन 1 JBN। अगेन उज्जवल जी 1 JBN के थ्रू अब हमारे जितने मेंबर्स हैं, मैं चाहूंगा सब लोग इस चीज को पॉइंट को ध्यान से सुने कि अगर आप किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं वहां पर 1 JBN के बाद आपको नियर बाय मेंबर्स आपके दिखेंगे। आपके पास तो 2 घंटे का फ्री समय है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं और बड़े इजीली होगा। एआई इनेबल्ड है, प्लेटफॉर्म हमारा बन गया है। हमने ऑलरेडी 1 JBN 3 महीने से स्टार्ट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन उसके थ्रू हो रहा है और ये सभी फीचर्स भी नेक्स्ट 15 डेज में अवेलेबल हो जाएंगे। ट्रायल फेज हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ फाइनली मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर इस इवेंट और इस चेन्नई प्लस टीम के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। थैंक यू once again प्रमोद जी सा एंड चेन्नई प्लस टीम, इट इज रियली फैंटास्टिक वर्किंग विद यू। थैंक यू उज्जवल जी। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम JBN to Pagaria JBN is outstanding in last 2.5 years और आगे 1.5 साल में आपको विश्वास दिलाता हूँ आपने जो भी उम्मीदें रखी है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इस इवेंट को हम सिर्फ एक माइलस्टोन के रूप में JBN के लिए नहीं देख रहे हैं बल्कि पूरे जीतो के लिए एक मोमेंटम के रूप में देख रहे हैं। बिकॉज जब जैन्स बिजनेस में यूनाइट होते हैं तो हम सिर्फ ग्रो नहीं करते, वी इंस्पायर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज द मेन मोटो ऑफ द इवेंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन दिस इवेंट एंड टू होस्ट मेनी मोर इवेंट्स विद चेन्नई प्लस। और इसमें बहुत सारी नई चीजें आएंगी जो टाइम के साथ आपको पता चलेंगी। इट इज जस्ट अ ट्रायल और ट्रेलर सॉरी, और वो आपको अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली पता चलेगा। थैंक यू, जय जिनेंद्र, थैंक यू। Organizing committee and all the members who have been working tirelessly for this memorable journey for last so many days and months. Respected Suresh ji,
Narendra ji, our backbone, Ujjwal ji, Kailash ji, Pramod ji, Mahavir ji Mehta. Pardon me if I am not taking all individual names because the list goes on and on and on. And rightly so, friends, when we are going to have something plus something of the scale and size, what we are going to do, it has to be a team of tens, hundreds, thousands, millions. What is this event all about? Is it going to be another event? At the last JITO board meeting, there was a view expressed by many people that JITO is one of the major feature is lot of events. And when we talk of events, there are pluses, there are minuses. There have been views for and against in terms of is JITO becoming more and more an event organizing body? What are the takeaways one would think of by organizing so many events? And in that context, friends, the first question which all of us ask is whether this is yet another event being organized at this scale. To me, it is not an event. To me, it is a journey. To me, it's an idea. To me, this is something very, very massive, something very, very unique. The history is going to be created. Pramod ji, heartiest compliments for conceptualizing this entire program. Friends, very apt name, the Power Conclave. What is this power all about? And as Kailash ji was talking, we were discussing in the afternoon about how do we take it to the level for which it was conceptualized. When we talk of power, there are givers and there are takers in our society. And for that matter, in any society. And all of us meet where givers give, takers take. Friends, this is the Power Conclave where all the givers will be assembling. Assembling initiated by a chapter here, but it is getting participation of all zones, all chapters, not only nationally but internationally. And I think some of the intended outcomes of this mammoth initiative to me would be, it is perhaps the highest level of collaboration where almost all zones, chapters and international chapters are participating with full zeal and motivation. Friends, this would be a record FCP edition by a single initiative or single property of JITO JBN. And I would like to make one announcement, if I can say so. This is not an announcement in true sense, but I cannot control my emotions, that this program will add 108 new FCPs to JITO. Friends, we are going to have the most coveted summit, especially for CP fraternity. There was a view which was being expressed for quite long that what is in store for FCPs, CPs, this fraternity, how it is going to be different, what is the additional advantage which this fraternity is getting out of various classes of membership. Friends, I think this Power Conclave will also address the long-standing desire of giving something back by JITO organization to CPs and FCPs. In that context, I think this Power Conclave is going to be truly a multifarious movement or initiative which will have a lot of
takeaways or giveaways to FCPs, meeting at an international location where we have taking tours at various wings or projects as we call it at JITO, but I think this is not an international tour or event. It is basically a power conclave which will have a lot of objectives getting met, which travels beyond a chapter, which travels beyond a wing or a project, or I would rather would be apt to say that it will travel beyond the entire JITO fraternity. Friends, after Naukar Divas, I think the bar has been raised up, and whenever we look up to connect society, to connect fraternity, to take the people along, we need to think, I think, big and big. And in that context, I'm very grateful personally to Ujjwal ji sir, who have withstood with us over period and always motivated us in terms of doing something new, doing something which is of meaning and substance. While we will continue, or rather we are continuing all the properties of JBN in terms of 360, in terms of referrals, in terms of a lot of programs which have become the hallmark of JBN. But endeavor of this terms, JITO JBN or Pagaria JBN, is to create at least 2 or 3 new initiatives which will add to the entire fraternity and which will add more and more members and which will have business networking of different level. Friends, I think I wanted to say a lot of things, but as there is a limitation of time, I would rather contain here. There are a lot in store which I am sure Pramod ji and further organizing members will share with you. All I can say is that let us not miss this program, and I am sure, like how we had little kind of people who are not getting accommodated, I'm sure there will be limitations. So please be the first to register so that we have this entire program very, very smooth. And I'm sure the kind of response we are getting even at the pre-registration level, there is going to be a new property in making. Pramod ji, be ready for taking it to New York sometime or some other center. I'm sure we will have to organize that very soon. And friends, before I conclude, we are going to have road shows of our conclave across India in 12 cities, and we are discussing with the international wing also that whether we can organize one road show somewhere in Dubai or some such location. The whole idea is that we must take the meaning of JITO, we must take the purpose of business networking, and we must take all what we can together present to the society, to the last man of our fraternity, of our nation, and going global. With this, friends, thank you very much once again for assembling in large numbers. I think it is overwhelming, and I'm sure this will truly has already generated waves, and this will have a long-lasting, meaningful, dominant, substantive impression and work across the nation and rather traveling beyond nation. Thank you very much, and looking forward to welcome all of you in Colombo in 15, 16 and 17th of August. Thank you very much. So he is not going to come unless there is a silence here. Please, I request PGC people to be silent, please. Thank you. In Colombo, as we all know, registrations are every minute, 2 minutes we are getting, the numbers are going up. Current number is 257, and our target is 300 registrations by today. And we are having the list of speakers I wanted to share. The confirmed speakers. First is Akshay Kumar. When discipline meets stardom, living life on Jain principles, truly patriotic, wears a smile. He doesn't just act, he leads by example. Smriti Irani, from soap operas to the corridors of power, she is proof that strong voices build strong nations. And she is going to emphasize on networking. The podcaster Raj Samani, he turned content into currency and hustle into a habit. The voice of India's hungry young dreamers. Devdutt Patnaik,
mythology decoded, dharma reloaded. We have a confirmation from Rajat Sharma, Aapki Adalat will make him stand in JITO ki Adalat. We are waiting, we are very positive and we have got an oral confirmation that we are expecting a quick confirmation from Anand Mahindra. We are also waiting for some big names to be announced in next 1 week. Before we reach 500, I would request Joby FCPs and your friends throughout the nation, tell them to register, नहीं तो they will miss the Colombo. And this is just the start, and the real blockbuster cast is still under wraps. Stay tuned, keep guessing. Lot of legends are landing in Colombo. Stay tuned. And also, I wanted to, if anybody who's shifting from patron to FCP, who's converting from patron to FCP by paying the difference, we will take in Colombo for free, no charges for him. Wherever Jains are residing in the world, they should be part of JITO. And with this intention, we were able to expand JITO International up to 32 countries, 32 chapters. And in this tenure, we are going to increase this number by 10 more, and with this next 2 years, JITO International there will be 42 chapters. JITO and JBN, this time Kailash and Mahavirji, we had a very good synergy. So JBN on Wings, this time we launched, and first ever international meeting of JBN was taken to Kenya, and last month only, we had a JBN on Wings to the members from India, went to Muscat, Oman and Dubai, and purely for the business meetings, one-to-one meeting. So this is power of JBN we are taking internationally. And for this Colombo, I got a call from Kailash that we want to make this event international. And definitely from these 32 chapters, which are across the globe, we are there for the benefit of members present here. JITO International has chapter ranging from USA, Australia to there are 5 to 6 chapters in Europe. We have chapters in Africa, some 6 chapters in Africa, Southeast Asia, and all these places where our members are now getting benefit of having one-to-one businesses. The students are getting benefit whenever they are traveling for the studies. They are handled, and I would like to announce here that JITO International has got the consent from Apex to have its own JITO business hub in Dubai, which will help all the members who want to expand their business in the UAE countries and African countries. This will be a 10,000 square feet of co-working space in Dubai, where the members who are traveling and want to expand their business or export and do imports, this will be a single point contact where they will be get oil handled, how to register company, where to get the finances and all those things. So this is one more addition for JITO International. And then I would also like to announce that this summit at Colombo will definitely see that around 100 registered participants from the international, so that there will be a greater networking between the Indian members also. After this summit at August in the Colombo, in October month, we are having a global summit in Bali. The dates are 24, 25, 26 of the October. So participate for that also. And this Colombo visit is going to help me to get the registration for Bali also. I had the pleasure of working with Surajji and the director in charge in international, and Narendraji Sisimal is helping me out this time as their working committee in charge. Thank you very much, and thank you for inviting me, Pramodji, for this event. Thank you very much. Pramodji and everyone present here. Today I have come for an announcement here. It is regarding our JITO Ladies Wing Vertical Atmanirbhar. This initiative is aims at to empower our sisters in the community by providing them with the necessary machinery to set up small-scale businesses and become self-sufficient entrepreneurs. A heartfelt thank you to Pramodji, Manisha Chauradia,
who has expressed the desire for a generous contribution of 51 lakhs to our JITO Ladies Wing National Atmanirbhar project. A big round of applause for Pramodji and Manisha Chordia. Thank you, Pramodji, for being a catalyst for change and a shining example of kindness and generosity. Thank you so much. And this will be further taken to effects for the approval and it will proceed further. Thank you. Thank you, Sureshji, Advisory Committee member of JITO X, my colleague DK Jain at Working Committee, Sri Pramod Chordia, Chairman JITO Chennai Plus, Kailasi JBN Chairman, Directors Sri Maviji Lunawal, Sonali Dugar, Zone Chairman, Jitendra, Zone Chairman Sanjeev Ji, Rajesh Chandan Chairman, Chennai Foundation, other dignitaries, all the past chairmen of both the chapters, ladies and gentlemen, JITO family. A very warm, happy evening to all of you. JITO आपको पता है आज बहुत बड़ा बढ़ गया है और JBN उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विंग JITO के अंदर कोई है तो वो है JBN। JBN JITO की मूल वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JITO है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आता है JBN के थ्रू। JITO बिजनेस नेटवर्क, आपस में हम कितना JITO बिजनेस नेटवर्क कर सकते हैं उसके थ्रू। और JBN इन लास्ट कुछ सालों में इतना बड़ा हो गया है कि अब सिर्फ देश के अंदर नहीं, इस साल JBN इंटरनेशनल विंग के साथ भी मिलकर JBN को ऑन द विंग्स लेके इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं। उज्जवल जी जो हमारे क्या बोलते स्तंभ हैं इस JBN के, लास्ट 2 सालों से उन्होंने JBN को एक अलग लेवल पे स्पॉन्सरशिप देके किया, उन्होंने उसको वापस किया इस बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना JBN इस लेवल पे नहीं पहुंचता। तो अब JBN एक ऐसा कॉन्क्लेव कर रहा है कोलंबो के अंदर जिसके अंदर पूरे FCP और CP एक साथ, इंटरनेशनल के भी हमारे मेंबर्स एक साथ। आप ये मौका मत खोइए, इधर आपको आपके अंदर आपस का बिजनेस, हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं। जैसे मानवी ने बताया हमारा उद्देश्य घूमना नहीं है, हमारा उद्देश्य बिजनेस करना है। हमेशा हम JITO में कहते हैं अगर आप पेट्रन मेंबर बनते हैं 2 लाख रुपया देके, उसको आप खर्चा मत समझिए, उसको आप एक इन्वेस्टमेंट समझिए। वो 2 लाख आपको 20 लाख देगा। अगर आप 15 लाख देके CP मेंबर बनते हैं तो वो 15 लाख आपको 1.5 करोड़ देगा। और अगर आप 1.5 करोड़ देके जाप के या 2 करोड़ देके जाप के या 1.5 करोड़ देके आप श्रवण आरोग्य के बनते हैं वो आपको 10 या उसमें भी देगा 15 करोड़ 20 करोड़। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप एक दुकान खोलते हो तो पहले पैसा लगाना पड़ता है। JITO की मेंबरशिप इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नेवर एन एक्सपेंस। आप जो भी पैसा JITO के अंदर ऐसे मेंबर बनाएंगे वो आपका धंधा 10 गुना बढ़ाएगा, आपका नेटवर्क 10 गुना बढ़ाएगा, आपस की मेल जोल 10 गुना बढ़ाएगा। तो डोंट बी फ्रेंड्स, जो भी पेट्रन है ट्राई टू बिकम इन FCP। और प्रमोद जी ने तो आज बहुत जबरदस्त ऑफर दे दिया है कि जो अभी FCP बनेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस फ्री फॉर कोलंबो, आप ज्वाइन करिए। और कोलंबो के अंदर जो आपने FCP के लिए अमाउंट दी है, मुझे पक्का विश्वास है कि वो अमाउंट से 3 गुना ज्यादा आप कोलंबो मीट से लेके जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। இப்போ உங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ் 5+ OTT 800+ blockbuster movies 1+, 2+, 3+, multi+ languages, exclusive movies, brand new web series, interesting ஆன short movies, இப்படி நிறைய plus. Wait, இதுல மைனஸ் ஒரு விஷயமும் இருக்கு. மத்த எல்லா OTTs விட மைனஸ் பிரைஸ்ல ஒரு நாளைக்கு ₹1 மட்டும்தான். உங்க சந்தோஷத்தை பிளஸ் பண்ண போற OTT Plus இப்ப உங்க கையில. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT Plus இது ஆல் இன் ஒன் ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பிளஸ் பண்ணுங்க OTT Plus ஓட.